Good evening, ladies and gentlemen. Jawaharlal Nehru Cultural Center, Embassy of India, Moscow. I'm happy to welcome you to the grand opening of the portrait of a folk poet, writer and social reformer of Maharashtra, India, Shri Annabhau Sathe. May I please request the Deputy Chief of Mission of India in Moscow, Ms. Gina Uika, to come to the stage to the welcoming address. Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Honorable Speaker of the Maharashtra Legislature Assembly, President of the ICCR, the distinguished guests for today, scholars from Russia, members of the Indian Community Associations, my colleagues from the embassy. Good afternoon. At the outset, it's a pleasure and privilege for the embassy to be able to organize this event on behalf of the ambassador, who unfortunately is not able to join us today. Let me thank you all for joining us for this occasion. Let me thank and welcome the Deputy Chief Minister of Maharashtra to this embassy for sparing his time to be with us. It's a privilege for us to have him, sir, on the embassy, and all of us present here. We welcome you to this premises. Thank you so much for being part of this event today. I would also like to welcome the Honorable Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly. It's our privilege to have you here, sir. On behalf of all the embassy staff and all of us, we're happy to have you here and welcome to this event as well. President ICCR has been here yesterday as well. It's our pleasure and privilege to have us here yesterday, sir, for the presentation of the ICCR awards, and we are happy to have you welcome you again to this hall for this grand event. We have a grand delegation who has come from India. We are happy to have you here. On behalf of all of us here in the embassy, I welcome each one of you to this premises. I would also welcome the Indian Association, the members and the representatives who are here, the representatives from the Indologists and other academicians who are part. I also welcome my colleagues. A special word of welcome to all those in the team who have put together this event. I hope you would be benefited by the activities of this evening. Please do enjoy the evening. Thank you so much for Добрый день, уважаемые дамы и господа, наши почетные гости, ученые, представители индийского сообщества, коллеги из посольства. Для нас большая честь организовать это мероприятие сегодня здесь от имени посла. К сожалению, он себя плохо чувствует и не смог присоединиться, но от его имени хочу всех благодарить за то, что присоединились к этому мероприятию. Отдельные слова заместителю губернатора штата Махараштра. Сэр, большое спасибо, что вы находитесь здесь. Для нас это большая честь. Также благодарности спикеру из штата Махараштра, президенту Индийского совета по культурным связям. Вы находитесь здесь со вчерашнего дня и вчера присутствовали на церемонии вручения наград Индийского совета по культурным связям. Это огромное мероприятие, которое мы организуем. Хочу также отметить, что сюда приехала очень большая делегация из Индии. Позвольте выразить слова благодарности отдельно каждому участнику. Также слова благодарности индийскому сообществу в России, индологам, ученым, моим коллегам, всем, кто присутствует здесь. Большие слова благодарности директору культурного центра имени Джавахарлала Неру и команде. Большое спасибо за организацию этого мероприятия, за то, что собрали всех нас здесь. Спасибо. Thank you, DCM ma'am. May I now please invite to the stage for the unveiling of the portrait the President of Indian Council for Cultural Relations, Dr. Vinay Sahasrabudhe, Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Shri Rahul Narvekar, Honorable Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis, Deputy Chief of Mission Mrs. Gina Uika, and Director of Jawaharlal Nehru Cultural Center, Dr. Usha Arke.
Please. Thank you, distinguished guests. May I now please request you to take back your seats, and the President of Indian Council for Cultural Relations, Dr. Vinay Sahasrabudhe, to address the audience. The floor is yours, sir. Is she going to translate it? Okay. Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Speaker of the Maharashtra Vidhan Sabha, Shri Narvekar ji, the Deputy Chief of Mission, Srimati Geena Uika ji, the Director of the Jawaharlal Nehru Cultural Center of the Indian Council for Cultural Relations here, Srimati Usha R.K. ji, and several members of the academia, intelligentsia, even media for that matter, and more importantly, social work, who have come from various parts of India, especially Maharashtra, and ladies and gentlemen. Достопочтенный главный министр, господин Девендра Фаднавис, уважаемый спикер Законодательного собрания Махараштры, господин Рахуль Нарвекар, заместитель главы миссии госпожа Джина Уйка, директор культурного центра имени Джавахарлала Неру, доктор Уша Радха Кришна, представители интеллигенции, индологи, дипломаты, дамы и господа. Let me at the outset thank the Commerce in Mumbai, basically given some leadership by Sunil Ware and his friends for having gifted this wonderful portrait of LokShahir Annabhau Sathe, one of the icons, internationally recognized icons of Marathi literature. Позвольте мне поблагодарить Палату коммерции за то, что они предоставили в дар этот портрет Аннабхау Сатхи, одного из легендарных представителей литературы маратхи. What is remarkable about Annabhau Sathe was that we in Russia, like today in the morning, we had the unveiling of the statue of Annabhau Sathe here. But apart from Russia, countries and literary movements there have recognized the creative talent of Annabhau Sathe, and it is not for no reason that his literature has been translated in Czech, Polish, German, and English, and several other global languages as well. Сегодня утром в библиотеке иностранной литературы мы открыли статую Аннабхау Сатхи. И следует сказать, что не только в России, но и во многих других странах признали талант Аннабхау Сатхи, и не безосновательно на чешский, польский, немецкий, английский и некоторые другие языки. And therefore, while unveiling this portrait, which will later on be put up at the Jawaharlal Nehru Cultural Center of the ICCR here, in a way, ICCR believes that we are decorating ourselves. His portrait on the walls of the Jawaharlal Nehru Center will add several new dimensions to the activities of the Jawaharlal Nehru Cultural Center in Moscow.
Этот портрет мы разместим в культурном центре имени Джавахарлала Неру, который является представителем Индийского совета по культурным связям здесь, в Москве. И располагая портрет в JNCC, таким образом мы украсим сами себя. И как раз то, что портрет будет находиться в культурном центре, это даст новые направления деятельности культурному центру. For the information of the guests coming from India here, let me tell you that the Jawaharlal Nehru Cultural Center was established in 1989, and for last several years under the JNCC, which is of the ICCR, there are hundreds of Russian students who have undergone structured courses in Hindi, in instrumental music, in Indian classical dances and Indian music as well, and a whole lot of them still relish the knowledge acquired by them through the Jawaharlal Nehru Cultural Center. Для тех, кто родом из Индии и приехал сюда, в Россию, хотелось бы сказать, что культурный центр имени Джавахарлала Неру был основан в 1989 году, и сегодня там занимаются сотни русских студентов, которые изучают хинди, инструментальную музыку, также индийский классический танец. И все они безумно благодарны за те знания, которые они получают в культурном центре. We already have a language and literature section there where several portraits of Hindi literary giants are already there. And now we will have Annabhau Sathe, a Marathi literary giant with a universal recognition. В культурном центре уже есть портреты некоторых представителей литературы и литературных гениев Индии. И теперь в центре будет еще один портрет как признание универсального наследия. Not many Marathi literary figures have acquired international dimension through their literary works, and therefore, as a mark of respect towards Annabhau Sathe, Indian Council of Cultural Relations is happy to announce a Annabhau Sathe International Fellowship for any student from Russia desirous of studying Marathi literature for 1 year coming in Maharashtra. Хотелось бы упомянуть, что не все представители литературы маратхи были признаны во всем мире. И как знак уважения Аннабхау Сатхи наш совет учредил стипендию имени Аннабхау Сатхи. По этой стипендии русские заинтересованные могут поехать учиться в Индию на целый год в штат Махараштра. Before I close, let me thank Maharashtra Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji and the Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly Shri Rahul Narvekar ji for having taken out time and graced this function. We are sincerely grateful to you. И прежде чем я закончу, я хотел бы еще раз поблагодарить главного министра штата Махараштры господина Девендру Фаднавис, а также спикера законодательного собрания Махараштры господина Рахула Наврекара за то, что они удостоили нас присутствием на этом мероприятии. With the hope that the portrait of Annabhau Sathe will continue to inspire us further, I once again thank you one and all. Thank you very much. И с надеждой на то, что портрет Аннабхау Сатхи продолжит вдохновлять нас всех, я еще раз вас благодарю за присутствие на этом вечере. May I now please request the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Shri Rahul Narvekar, to address the audience. The floor is yours. Good evening, friends. It's indeed a pleasure being here this evening at the mission where we are here to attend the unveiling of the oil portrait of Sahitya Ratna, LokShahir Annabhau Sathe. At the outset, I would like to congratulate the mission as well as ICCR, Jawaharlal
Nehru Center, and all the organizers for taking up this task. To my mind, unveiling of a bust or unveiling of a portrait is not just a function, it is recognition to the great deeds, to the exemplary work that has been undertaken by the individual who's being recognized through the portrait and through the bust. This morning, we had the good fortune of unveiling the bust of Annabhau Sathe, and we are fortunate that this evening we are unveiling the portrait of Annabhau Sathe. The work done as a social reformist, the work done in the field of literature cannot be measured because this is way beyond any measurement. It's very easy and very different to undertake literature and literate work when you come from an accomplished background. But when you come from a situation of adversity, when you're struggling and fighting every day of your life for survival, and then when you establish yourself as one of the most premier literate, as one of the most renowned and recognized literature, that's where the difference comes. Annabhau Sathe has reflected the aspirations of those underprivileged who could not express themselves. He was the medium of expression of their expectations, their aspirations. And like they say, experience is the best teacher. And that's exactly what we see from the work of Annabhau Sathe. We lost him at an early age of 49. If this is what Hero of Hearts could have done in 49 years, had he got a larger span, one can't imagine the creation that he would have left behind. I salute this hero who comes from, I'm proud to say this, who comes from Maharashtra. Maharashtra is extremely proud of him. So is the country. And now, with this recognition, I am absolutely sure that the world at large will know about his work and will be proud of his accomplishments. I once again thank each one of y'all for being here in recognition of the respect, in recognition of the work that Annabhau Sathe has undertaken. I once again thank the mission for organizing this event. I would like to take this opportunity to thank every individual who has contributed in every possible manner to ensure that an excellent function like this takes place here this evening. Thank you once again for all your deeds. Looking forward to carrying forward this legacy and not only celebrating this physically but virtually undertaking and following the principles which Annabhau Sathe has set forth before us in all our deeds and undertakings in the future. Thank you once again and wish you all a very good evening.
Уважаемые дамы и господа, друзья, для меня большая честь находиться здесь, в этой миссии, на этом мероприятии сегодня, на открытии масляного портрета Аннабхау Сатхе. Я хочу поздравить эту дипломатическую миссию, Индийский совет по культурным связям, Культурный центр имени Джавахарлала Неру и всех организаторов за ту работу, которую они провели как по открытию бюста, так и портрета. Это не просто мероприятие очередное, а это мероприятие знаменует признание великой деятельности выдающегося человека. И сегодня утром у нас была возможность открыть портрет, а сегодня вечером мы рады присутствовать на церемонии показа. Утром был портрет, а сейчас мы рады присутствовать на церемонии показа портрета. Аннабхау Сатхе был социальным реформатором, был литератором, и его деятельность невозможно каким-либо способом измерить, потому что такого рода деятельность, как литература и социальная работа, они неизмеримы. Стоит отметить, что он добился невероятных успехов, учитывая то, в каких сложных условиях он вырос. И это сделать не так-то и просто обычному человеку, потому что он это сделал, даже учитывая те сложные условия и борьбу за жизнь вел. И он стал всемирно известным, признанным литератором. И это стоит отметить. Здесь мы все собрались для того, чтобы отметить его деятельность. И также хочу сказать, что Аннабхау Сатхе своей деятельностью помог выразить надежды и ожидания тех людей, у которых такой возможности никогда не было, тех, у кого не было такой привилегии. И я хочу сказать, что самый лучший опыт в жизни — это опыт учебы, опыт того, как ты показываешь свою работу через свою жизнь. Мы потеряли Аннабхау Сатхе на 49-м году его жизни, но дал невероятным героям. Представьте, если бы у него было больше, чем 49 лет, чего бы он смог добиться в такой период жизни. И сегодня я хочу сказать, что я горжусь тем, что Аннабхау Сатхе является уроженцем Махараштры. Махараштра им гордится Индия. И я уверен, что такое мероприятие позволит рассказать об этом великом человеке всему миру. И мы все здесь находимся для того, чтобы отдать дань уважения деятельности Аннабхау Сатхе. Хочу выразить слова благодарности дипломатической миссии за организацию сегодняшнего мероприятия. Хочу поблагодарить каждого, кто присутствует здесь, за все, что вы сделали. И я надеюсь, что мы все продолжим распространять знания и поможем распространять то наследство, которое оставил Аннабхау Сатхе как в физической форме, так и в виртуальной, и сможем следовать его принципам в будущем. Спасибо. May I now please request the Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis to address the audience. May I give some rest to the Madam Interpreter? आज के इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित स्पीकर राहुल नार्वेकर जी, प्रेसिडेंट ICCR डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन गिन्ना जी, जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर की उषा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मिलिंद कांबळे जी, सुनील कांबळे जी, अमित गोरखे जी, महाराष्ट्र से पधारे हुए हमारे सभी साथी और उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ICCR का और हमारे मिशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज दूसरा मौका हमको मिल रहा है
अण्णाभाऊ साठे जी को नमन करने का, उनकी याद को स्थापित करने का। जैसे सुबह राहुल जी ने भी बताया कि जो हमारी रशियन स्टेट लाइब्रेरी है वहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण हमने किया और अब उनके तैलचित्र का अनावरण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। स्लम बस्ती में रहने को आए तो छोटे से झोपड़े में रहते थे और उनके घर का दरवाज़ा बड़ा छोटा था। तो किसी ने उनको कहा कि ये दरवाज़ा थोड़ा ऊंचा क्यों नहीं कर देते, बहुत छोटा दरवाज़ा है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि इसलिए छोटा रखा है कि जब आएंगे तो उनको भी झुक कर आना पड़ेगा। और सहयोग देखिए कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर में ये सेंटर स्वयं आज अण्णाभाऊ साठे जी को उनका स्वागत कर रहा है और उनको उनकी प्रतिमा को स्थापित कर रहा है। अण्णाभाऊ साठे जी की जीवनी ये अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली है। और एक उनके बचपन का प्रसंग है कि जिसमें उस समय के क्रांतिकारी क्रांति सिंह नाना पाटिल ये उनके गांव में भाषण देने के लिए गए। अंग्रेज़ों की पुलिस ने उन पर हमला किया और सारी भीड़ तितर बितर हुई। वो अरेस्ट करना चाहते थे, क्रांति सिंह नाना पाटिल वहाँ से भागे, वो अरेस्ट नहीं होना चाहते थे। और कुछ समय बाद उनके ध्यान में आया कि एक बच्चा उनके पीछे दौड़ रहा है। और कुछ अंतर जाने के बाद उन्होंने उस बच्चे को रोककर पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है। उस बच्चे ने कहा मैं आपके पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं आपको राह दिखा रहा हूँ कि कहाँ आपने छुपना चाहिए। वो बच्चा था लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे। और कई बार हम लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है ये जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। और अण्णाभाऊ साठे जी ने ये हमें दिखाया कि व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रताड़ना को उन्होंने अपने जीवन में सहन किया, भोगा, उस प्रताड़ना के बावजूद भी दुनिया को राह दिखाने का काम उन्होंने किया और शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज कई स्कॉलर्स उनके लेखनी के भरोसे या उनकी लेखनी पर रिसर्च करके डॉक्टरेट पा रहे हैं। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके कार्य का महात्म्य है। और जो हमारे देश में वंचित है, पीड़ित है, ऐसे हर व्यक्ति की आवाज़ के रूप में अण्णाभाऊ साठे जी को देखा। और इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि जहाँ अन्याय है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ के रूप में अण्णाभाऊ साठे है। उनकी लेखनी जो है वो उस अन्याय को अभिव्यक्त करती थी, लेकिन केवल अभिव्यक्त नहीं करती थी, केवल दुख सामने लाने वाली लेखनी नहीं थी, उसके खिलाफ लड़ने का हौसला देने वाली भी लेखनी ये उनकी थी। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समय के लाखों लोगों के जीवन में एक प्रकार से उन्होंने अपनी कलम से बदलाव लाया और उनमें लड़ने की और जीतने की का एक हौसला
उनकी कलम के कारण पैदा होता हमने देखा। और विशेष रूप से रशिया के साथ उनका जो नाता है, जो उन्होंने स्टालिनग्राड का पोवाड़ा लिखा, क्योंकि वे हमेशा मजदूरों की बात करते थे, स्वयं मजदूरों में रहे थे, मिल वर्करों का या फिर छोटे छोटे काम करने वालों का दर्द उन्होंने सहा था, भोगा था। और इसलिए वे हमेशा ये मानते थे कि जिस प्रकार से मजदूरों की क्रांति उस समय रशिया में बहुत दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी, उसी प्रकार की क्रांति मुझे करनी है। और उनका जो स्टालिनग्राड का पोवाड़ा था वो रशिया में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद उनका एक कनेक्ट रशिया के साथ हमको दिखाई पड़ता है। रशिया वो आए, उनको बुलाया गया, और रशिया में आने के बाद उन्होंने जो प्रवास का वर्णन लिखा है वो भी मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत यथार्थ इस प्रकार का वर्णन। ये केवल इट्स नॉट अ मियर ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग तो बहुत लोग लिखते हैं, और ट्रेवलॉग एक परिस्थिति का वर्णन होता है, लेकिन उसके आगे जाकर उसमें से कुछ संदेशा मिलना, ये भी एक बहुत महत्व की बात होती है। वैसा संदेशा उसके माध्यम से हमको मिलता है। और शायद वो एक रशिया और भारत के बीच एक कनेक्टर के रूप में भी वे काम करते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब भारत की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे होते हैं और इंडो रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी 75 साल पूरे हुए हैं, ऐसे बहुत ही अच्छे मौके पर यहाँ एक और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मैं आईसीसीआर का, भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उनके इस तैल चित्र का अनावरण भी आज हो रहा है। और ये मौका आपने हमको दिया, इसके लिए आपने हमको निमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को आज की शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।